301 प्रश्नकाल आफ्टर क्वेश्चन आवर। प्रश्न संख्या 301। माननीय उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न नोटिस पूछा कर लिया उसका, मैंने संसदीय शिष्टमंडल को बता दिया। ये मुझे पता है सर कि जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि ये जो पानी है वो शुद्ध जो है राज्य का विषय, राज्य सरकार मेरे विशेष संज्ञान में आ गया है और मैंने संसदीय शिष्टमंडल को ये बात बता दी है। उन्होंने उत्तर सभा पटल पर रख दिया है सर, मैं ये जानता हूं सर। एक मिनट प्लीज बैठे, प्लीज एक मिनट बैठे, प्लीज कंप्लीट विषय है, प्लीज विषय मेरे संज्ञान में आया है और आपने संज्ञान में डाल दिया है और मैं इसकी व्यवस्था दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही बात है जो मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये जो पानी है वो राज्य का विषय है और ड्रिंकिंग वाटर देना है कि नहीं, खेतों में सिंचाई जाना है कि जाना ही नहीं जाना है, केंद्र सरकार के चाहने के बावजूद भी राज्य सरकार यदि नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा है सर और जो उसका जवाब आया है जो राज्य सरकार से ही केंद्र सरकार ने लिया होगा वो बहुत ही अलार्मिंग है सर। मैं जिस इलाके संथालपना से आता हूँ वहाँ TDS और पीएच जो क्वालिटी है, पीने के ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है सर। और क्लोराइड, नाइट्रेट और फॉस्फेट गंगा होने के कारण वो पूरा अल्काइन जो है लगा हुआ है। और मेरे इलाके में पूरे देश दुनिया में जो है काला जार खत्म हो गया, लेकिन चाहे काला जार है, चाहे लीवर का एनलार्जमेंट है, चाहे स्टोमक डिसऑर्डर है, इस तरह की सारी बीमारियां संथालपना में इस देश में सबसे ज़्यादा है। जो लेबोरेटरी की बात माननीय मंत्री महोदय ने की है, राज्य सरकार के माध्यम से ही कहा होगा, वो कोई लेबोरेटरी वहां मौजूद नहीं है। दूसरा जो जल जीवन मिशन है जो प्रधानमंत्री जी का बड़ा मिशन है सर, और जिसमें बार बार मैंने मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि गंगा से जो है वो वाटर जाना है। आज तक जो वहां बनी है, जो योजनाएं बनी है सर, उसमें गंगा से पानी संथालपना के यदि सभी जिलों में नहीं जाएगा, खासकर देवघर जैसे जिले में यदि नहीं जाएगा तो ये सारी योजनाएं बेकार हो जानी चाहिए सर। जैसे चापाकल का हो जाना है वैसा ही हो जाना है, क्योंकि लेयर ही नहीं है नदी में। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि जो मैंने आपसे आग्रह किया था कि गंगा ग्रिड बनाइए और जो हमारे लोग डायरिया, कालाजार और लीवर एनलार्जमेंट से पीड़ित है उसको बचाइए। इसके लिए क्या वो कोई जांच कराएंगे? क्योंकि अभी तक की जो योजनाएं हैं वो सत्ता पर बहुत ही गलत योजना बन रही है, एक बहुत बड़ा स्कैम है और गंगा ग्रिड से हम लोगों को जोड़ेंगे। इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो चिंता व्यक्त की है, ये सेम चिंता इन्होंने मुझे पत्र लिख करके, जैसा इन्होंने बताया, कई बार की है। लेकिन हम सब जानते हैं, जैसा इन्होंने भी अभी कहा, कि जल राज्य का विषय होने के चलते DPR बनाने से लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने से लेकर के उसको ऑपरेट करने और रखरखाव करने तक का सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत सरकार प्रत्यक्षतः उसमें किसी भी तरह से कहीं अपना इंटरफेरेंस अगर अनटिल अनलेस राज्य सरकार न चाहे नहीं कर सकता है। माननीय सदस्य ने जो पत्र मुझे लिखा था, मैंने इनकी चिंता को शांति से बोल रहे हैं। वो भारत माता की हत्या, ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। 2 घंटे की ज्यादा की स्पीच जब तक चाहे बोले, कौन रोक रहा है उनको? परंतु क्या एक हत्या या उस बलात्कार की घटना जिसमें 2 महिलाओं को पुलिस ने हवाले किया और उनके साथ बलात्कार हुआ, जिसमें एक कारगिल के रक्षक जवान भी शामिल था आर्मी का, आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसी घटना हुई और हमने इन लोगों को दंडित किया? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 2 घंटे के भाषण में वो नहीं बता सके जो सवालात आज जनता के मन में तैर रहे हैं। कब होगी भारत के नारियों की सुरक्षा की गारंटी? कब तक उनकी अस्मत
इस तरह लुटती रहेगी। Let me take this across to my colleague Pallavi Ghosh, who's now joining us on the broadcast. Pallavi, let's first begin by talking about the Home Minister's speech, the 2-hour-long rebuttal that he came up with in the lower house of the Parliament. The essential aspect that he underlined was that despite the fact that we wanted a conversation, the opposition is staying away. This was a deliberate attempt to stall the proceedings of the parliament because they just do not want to have a dialogue when it comes to the Manipur situation. They have not even allowed the Home Minister, who has visited that area, that entire state, to respond. Now, what is the opposition's entire criteria? How are they going about responding to that speech? Because that, like we've been mentioning, is also a run-up to what can be expected from the Prime Minister's speech. Yeah, I think the Prime Minister's speech today is definitely going to be focusing on and used as a campaign pitch and talk about the kind of achievement work which has been done by his government. The base has already been laid, one by the Home Minister yesterday when he talked about what is being done for the people of Manipur, and the Finance Minister speaking around noon in where she's going to talk about the state of the economy, what are the facilities which are being done, how people are getting money directly into their bank account, and the point-by-point rebuttal to much of the opposition's allegations, and also briefly perhaps touch on Manipur. Now, I think what the opposition is going to look at is that whether he gives a lot of focus on Manipur or not. If he doesn't, then they are going to either walk out or they're going to register a protest saying that the reason why we called a no-confidence motion, that purpose has not even been addressed by the Prime Minister. And if that happens, Pallavi, then what happens to the no-confidence motion debate? If there is a walkout? No, I mean, the Prime Minister's response is always the end of the no-confidence motion. It's usually put to vote and you get a sense of the House. Either you do it by slips or you do it by voice vote. That's a prerogative really of the Speaker, and of course if a demand comes in from the opposition. It's not about the numbers, because the numbers are clearly stacked in favor of the government, and also they are non-N.D.A. but non-Congress parties, non-opposition parties like the BJD and all, who have already made it very open that they're going to stand and vote against the no-confidence motion. It is going to be a number game. It is certainly going to be used by the government and by the Prime Minister to make the point that while the opposition wants to do its politics, the people of the country continue to have faith in his government. Right. And also, Pallavi, yesterday when the Home Minister was responding, it was, like I said, it was a couple of hours that the speech really extended to. What is it that the Congress is now strategizing upon? Because he did go ahead and accuse the erstwhile Congress regime in the state. He also went on to say that the resignation by N. is not really required because he said, quote unquote, he's being cooperative. Yes, I think the Home Minister made it very clear yesterday in his speech that whatever could have been done by the state administration has been done. And you cannot have a political instability at this point of time. The DG and the other security agencies have been facing action. Whenever there was a talk of a resignation of the Chief Minister, there was a resistance coming in from women itself. So they don't want to rock the boat. But politically speaking, the BJP certainly wouldn't ask for the resignation of a Chief Minister because the opposition is demanding it. If it has to happen, it happens at their own time frame. That usually has been the BJP. So as of now, there's a complete defense really of the Chief Minister. With the Home Minister, there are in okay. Why? All right, Pallavi, there's some problem with your audio link. We will see if at all you're able to hear me clearly or not. I also would want to understand from you that you have been speaking to various stakeholders. You were just doing a live broadcast from outside the Parliament. In fact, we've been told that we've lost that link with Pallavi. There was some problem that we were facing. We will go back to Pallavi in just a bit. But this is what is the lowdown of what has happened yesterday in the Parliament and what is expected today. Like we've been mentioning, it was a fiery speech by the Home Minister, extended up to 2 hours. He went on to target the opposition, especially the Congress, in that speech. He's also, in a sense, spoken about how the Congress government really did not do much when it was about their regime in the state of Manipur, and that is also an important aspect that the Home Minister touched upon. All of this is going to be leading to what is expected of the Prime Minister when he goes about responding to that no-trust motion at 4 p.m. this evening. Right now, the Lok Sabha and Rajya Sabha, both the houses of the Parliament have been convened and the day's proceedings have started. And now we'll have to actually see where do things really go from here.